Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorers। मैं हूँ दिवाकर सानकारी। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ परम्यूटेशंस ग्रुप। ओके, सो परम्यूटेशंस ग्रुप करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए सेट थ्योरी के बारे में। पहली इंजेक्टिव मैप्स। लेट x and 2 be sets a map f such that x to y is called injective if it takes distinct elements of x to distinct elements of y. That is, if a comma b belongs to x and a not equal to b, then f of a not equal to f of b. कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज ऑलवेज डिस्टिंक्ट होगा अगर f इंजेक्टिव हुआ। क्लियर? सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, let x equal to 0 1. Here 0 and 1 are the only element of x, and let y equal to 4 6 9. Let f such that x to y be defined by f of 0 equal to 4 and f of 1 equal to 6. Here we notice that कोई भी दो distinct element का image जो है वो distinct है, so f is injective. It is obvious. Second problem, a mapping f such that R to R is defined by f of x equal to 3x plus 1. So for this problem, first we consider two distinct elements of domain set. Let a and b belongs to R and a not equal to b. Then 3a not equal to 3b and 3a plus 1 not equal to 3b plus 1. So f of a not equal to f of b. And this shows that f is injective. Third problem, the mapping f such that R to R plus is defined by f of x equal to e to the power x. So for this problem, first we consider the if the image same. If the image are same, f of a not equal to f of a equal to f of b, then e to the power a equal to e to the power b, and this implies a equal to b. So for same image, the elements are same, which belongs to the domain set, and contrapositively I can say a not equal to b imply f of a not equal to f of b. So f is injective. Clear? Any doubt? Next page. Now geometrically समझने की कोशिश करते हैं. A function f x to y is injective if every horizontal line drawn parallel to x-axis cuts the graph of f at most once. So पहली वाली अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पर अगर कोई भी एक हॉराइजेंटल y इक्वल टू c ड्रॉ करते हैं तो कर्व को एक पॉइंट पे काट करते हैं. दैट्स मीन यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसके वजह से f of x इक्वल टू c आ रहा है एट लिस्ट ऑन पॉइंट पे, एट मोस्ट ऑन पॉइंट पे. सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है. बट सेकेंड वाला जो कर्व है यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो देखोगे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. एक दिस एक्स के वैल्यू के वजह से, एक इस एक्स के वैल्यू के वजह से, एंड और एक दिस एक्स के वैल्यू से वजह से. सो image same because this horizontal line is y equal to c. So here for 3 distance value the image are same, so it is not injective curve, but this curve is injective. Clear? Now what is the definitions of surjective maps? A map f such that x to y is called surjective map if for every y in capital Y, that is codomain set, there exists at least one x in domain set capital X such that f of x equal to y. So some example, f such that R to R is given by f of x equal to x cube. It is a surjective. It is obvious. You can check easily. Second problem is f such that R to R defined by f of x equal to 3x plus 1. Here x belongs to R. So for this question, let y be any element of codomain set R. Want to show that there exists at least one element x belongs to R. Here R is domain set such that f of x equal to y. Now f of x equal to y imply 3x plus 1 equal to y and x equal to y minus 1 by 3. Here y minus 1 by 3 belongs to R.
for any y belongs to R. So we see that if I consider any element y belongs to codomain set R, then we find at least one element y minus 1 by 3 belongs to domain set R. This shows that the function f is surjective. Clear? Any doubt? Next page. Similarly, इसका भी graphical view देखते हैं. A function f such that x to y is surjective if every horizontal line parallel to the x-axis intersect the graph of f at least once, and for surjective it is at most once. तो पहली वाली कर्व अगर देखोगे, here codomain set is all real numbers and this curve is continuous. यहाँ पर कोई ending नहीं है. So कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो कोई ना कोई एटलीस्ट वन पॉइंट पे काट करेगा. So that's mean for any element in codomain set it has a PD image. But for second curve, here codomain is y greater equal 0 and the curve is end these positions, and below this curve कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो तो कोई काट नहीं कर रहा है. That's mean there exists some point for which in domain set has no pre-image. Clear? Next page. Now next problem. It is a very important problem. Find the number of bijective mapping between two finite sets. इसको करने से पहले what is the definitions of bijective map? A mapping f such that A to B is called bijective if it is both injective and surjective. तो इस प्रूफ को करने के लिए कंसिडर करते हो दो सेट को. लेट A and B be two finite sets. Cardinality of A is n and cardinality of B is m. Now n and m are equal? Not equal. ना n बड़ा है m से, n छोटा है m से, उसको जानने की कोशिश करूंगा पहले. तो a bijection is possible only when n equal to m. इसको प्रूफ करना पड़ेगा पहले. If n not equal to m, then either n less than m or n greater than m. If n less than m, then subjectivity fails because B set is बहुत B सेट के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट है, A सेट से ज्यादा एलिमेंट है. सो कोई एक एलिमेंट रहेगा उसका कोई पीर इमेज नहीं रहेगा. सो सब्जेक्टिविटी फेल्स. एंड इफ n ग्रेटर देन m देन इंजेक्टिविटी फेल्स बिकॉज यहाँ पर अगर कोई भी दो डिस्टेंट एलिमेंट ले तो उसका डिस्टेंट पीर इमेज हमेशा नहीं आएगा क्योंकि ए सेट बहुत बड़ा है. हर एलिमेंट का अगर इमेज रहेगा तो एक टाइम के बाद दो एलिमेंट के इमेज सेम होना पड़ेगा. So injectivity is fails. Therefore, number of bijections. So here n equal to m. Now, number of bijections equal to 0 when n not equal to m. So there exists no bijective map. Now assume n equal to m. Let a equal to a1, a2 dot 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 n. A का member है a1, a2 dot 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 n and b का member है b1, b2 dot 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 bm. Now, counting the bijections, choose image of A1. There are n possible choice for B in B because the cardinality of A and B are same. So n equal to m. In this case, there are n possible choice. A1 का image B1 भी हो सकते हैं, B2 भी हो सकते हैं, Bn भी हो सकता है. कोई भी एक चूज होने के बाद आर स्टार कितना ऑप्शन रहता है? अगर A2 पे A1 का इमेज A2 हो रहा है तो आर n माइनस जो एलिमेंट है वो A2 का चॉइस होगा क्योंकि वन एलिमेंट इज ऑलरेडी यूज्ड. सो देयर आर n माइनस वन चॉइस. कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर an. देयर आर हाउ मेनी चॉइस? देयर आर ओनली वन चॉइस. So
total number of bijections is n into n minus 1 into dot 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 into 2 into 1, so n factorial. So if cardinality of A and B are same, then the number of bijective mapping between A and B is n factorial, and if cardinality of A and B are not equal, then the number of bijective mapping is 0. Clear? Any doubt? Next page. Now, what is the definitions of permutations? Let A be a non-empty set. A permutations of A is a bijective mapping of A onto itself. That's mean a permutations is a mapping, and the mapping is bijective. Now, second definitions. A group G star is called permutations group. Here, what is G? Here, G is the collections of all permutations of A. That is the collections of all bijective mapping of A to A itself. And A star is, यहाँ पर मैपिंग के ऊपर कौन सी ऑपरेशंस होना चाहिए? कॉम्पोजिशंस ऑफ टू मैपिंग्स, जो पहली वाली क्लास में करा था, जो A star is compositions of mapping and G star is not from a group, but यहाँ पर G is collections of all bijective map. So यहाँ पर G जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है स्टार के रेस्पेक्ट में. उसका प्रूफ मैंने बाद में दिया है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ. एंड नोटेशंस. लेट A equal to A1 A2 dot 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 An be a finite set. A permutations of A is bijections, and the mapping is denoted by sigma. And for A1 the image is sigma A1, for A2 the image is sigma A2, for N the image is sigma N. We know, it is obvious. Now sigma can be written as A1 by sigma A1, A2 sigma A2 dot 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 N sigma N. इस रिप्रेजेंटेशंस में पहली ऊपर वाली का जो इमेज वो नीचे वाली डिनोट, ऊपर वाली का जो इमेज है माने A1 के इमेज सिग्मा A1 वो नीचे वाली एलिमेंट डिनोट करता है. क्लियर? नेक्स्ट पेज. नाउ number of permutations. Let A equal to A1 A2 dot 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 N be a set with n elements. A permutations of A is a bijective map from A onto itself. So मैंने पहले एक प्रॉब्लम करा है, उसमें कितना बाइजेक्टिव मैप होती है एक दो फाइनाइट सेट के अंदर देखा है, वहां पर n फैक्टोरियल. तो यहाँ पर कितने परमुटेशंस होगा? यहाँ पर भी n फैक्टोरियल होगा. क्लियर? एंड दिस permutations denote the set of all permutations of A is denoted by Sn. Clear? And the total number is n factorial. That's mean the cardinality of xn is n factorial. Clear? Now multiplications of permutations. Let A equal to A1 A2 dot 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 An be a finite set, and F and G be two permutations of A, that is bijective maps from A to A. Clear? Definitions. The multiplications of permutations of F and G is defined by compositions of functions and is denoted by F compose G. Clear? Actually F into G mean एक्चुअली दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस मतलब मैपिंग में वो कॉम्पोजिशन से होता है. यहाँ पर फॉर ईच ए आई बिलोंग्स टू ए, एफ कॉम्पोज जी ए आई इक्वल टू एफ ऑफ जी आई, जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग का डेफिनेशन है. दैट इज इफ एफ इक्वल टू ए वन ए टू डॉट 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 एन एंड ए वन का इमेज जो है एफ ऑफ ए वन, उसके नीचे लिखेगा ए टू का इमेज जो है एफ ऑफ ए टू and an f of n. Similarly g लिख सकते हैं. एंड f कंपोज g मतलब a1 एंड a1 का इमेज क्या है f कंपोज g के लिए f of g of a1 एंड a2 का इमेज f of g of a2.
सिमिलरली A1 का जो इमेज है वो लिख के F कंपोज G इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज। जो परमुटेशंस का जो कॉम्पोजिशंस वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट A इक्वल टू A1 A2 A3। डिफाइन टू परमुटेशंस F एंड G ऑन A बाई F इक्वल टू A1 एंड A1 का इमेज A2, A2 का इमेज क्या है A1 एंड A3 का इमेज A3 एंड G एक परमुटेशंस दैट्स इन ए बाइजेक्टिव मैप। उसमें A1 का इमेज क्या है A1, A2 का इमेज A3, A3 का इमेज A2। क्लियर? एंड नाउ F कंपोज G इसको कैसे करते वो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बोलना चाहता हूँ। देखो A1 का इमेज क्या है, पहले इसके ऊपर A1 A2 A3 लिखना पड़ेगा। नाउ A1 का इमेज क्या है A1 एंड नाउ दिस A1 का इमेज यहाँ पर क्या है A2, सो यहाँ पर A2। सिमिलरली A2 का इमेज क्या है A3, यहाँ पर A3 का इमेज क्या है A3, सो यहाँ पर A3। नाउ A3 का इमेज क्या है A2 एंड दिस A2 का इमेज क्या है यहाँ पर A1, सो यहाँ पर A1 होगा। क्लियर? कैसे करता है कंपोजिशन। सिमिलरली अगर तुम G कंपोज F देखोगे तो पहले A1 A2 A3 लिखने के बाद A1 का इमेज क्या है A2 और दिस A2 यहाँ पर इमेज क्या है A3, तो यहाँ पर A3 होगा। A2 का इमेज क्या है A1 एंड दिस A1 का इमेज यहाँ पर A1 ही, तो यहाँ पर A1 होगा। इज A3 यहाँ पर A3 इज A3 का इमेज क्या है A3 एंड इज A3 का इमेज यहाँ पर क्या है A2, सो A3 का इमेज यहाँ पर A2 होगा। नाउ here we notice here अगर तुम नोट करोगे तो देखोगे F कंपोज G एंड G कंपोज F नॉट इक्वल बिकॉज A1 का इमेज A2 है बट यहाँ पर A1 का इमेज A3 है, सो they are not same, so multiplications of permutations is not commutative. Clear? Any doubt? Now inverse of permutations, let A equal to A1 A2 dot 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 AN and let sigma be a permutations, that means sigma be a bijective mapping from A to A. Now definitions, the inverse of permutations sigma denoted by sigma inverse is also a bijective mapping from A to A such that sigma compose sigma inverse equal to sigma inverse compose sigma equal to I, where I is the identity permutation. Therefore sigma equal to A1 A2 A3 एंड A1 का इमेज सिग्मा A1, A2 का इमेज सिग्मा A2 एंड AN का इमेज जो है सिग्मा AN। इसका जो इनवर्स परमुटेशन होगा वो कैसे लिखते हैं सिग्मा इनवर्स इक्वल टू, इसको अगर कन्वर्स कर देते हो मतलब सिग्मा A1 सिग्मा A2 सिग्मा AN, सिग्मा A1 का जो इमेज होगा इनवर्स इमेज होगा वो A1 एंड सिग्मा A2 का जो इनवर्स इमेज होगा वो A2। ठीक है? एंड सिग्मा AN का जो इनवर्स इमेज होगा वो AN। क्लियर? नेक्स्ट। नाउ जो प्रॉपर्टी हम लोग किया है देखते हैं। पहली मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस इज एसोसिएटिव, इट इज ऑब्वियस in general F compose G not equal to G compose F, that's mean not commutative in general. The identity permutations I defined by I of AI equal to AI satisfied F compose I equal to I compose F equal to F, it is obvious, and the inverse permutation satisfies this property we already show. Clear? Now next. Now example, let X be a non-empty set, Sx be the collections of all bijective functions from X onto itself. If circle denotes the compositions of functions, show that Sx circle is a group and hence show that Sx circle is a permutations group. For showing group, we know that first we want to show that it is closed, second is it is associative, and third is existence of identity element, and fourth is existence of inverse. So क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंस F and G अगर x of x का मेंबर हुआ तो F and G are both on and onto functions, then their compositions must be on and onto, so F compose G belongs to x of x because it is the collections of all bijective functions. Clear?
Associativity. Compositions of functions is associative. It is obvious. And identity element. Define the identity functions ix, x to x by ix of x equal to x for all x belongs to x. Then ix is identity element. Clear? It is obvious. Next page. Existence of inverse. Since f is bijective, its inverse functions exist and which is also on and onto. So f inverse belongs to s of x. Now it is clearly f compose f inverse equal to f inverse compose f equal to ix. So f inverse is the inverse of f. That means each element of sx has the inverse in sx. So conclusions, xx is the set of all permutations group. So it is a permutations group. Clear? Now next, cycle of a permutations or circular notations. Let a equal to a1 a2 dot 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 n, and let sigma be a permutation. That means it is a bijective functions, bijective mapping from a to a. Definitions: the permutation sigma is called a cycle of length k if there exist k distinct elements a1 a2 dot 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 ak in the set A such that sigma of a1 equal to a2, sigma of a2 equal to a3 dot 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 sigma of ak equal to a1, and sigma of x equal to x for remaining other elements. These permutations is written as circular or cycle notations as sigma equal to a1 a2 dot 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 ak. This permutations is called k length, cycle of k length. Clear? Next. नाउ एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट sigma and tau belongs to S6. S6 means the set of permutations of 1, 2, 3, 4, 5, 6. And sigma is defined by 1, 2, 3, 4, 5, 6, where 1 का image 2, 2 का image 3, 4 3 का 4 and 4 का 1, 5 का 5, 6 का 6. Similarly tau ऐसे डिफाइन करा हुआ है. Show that sigma is a cycle and find its length. यहाँ पर सिग्मा ऑफ 1 इक्वल टू 2, सिग्मा ऑफ 2 मतलब 2 का इमेज क्या है 3, सिग्मा ऑफ 3 इक्वल टू 4 एंड सिग्मा ऑफ 4 इक्वल टू 1, एंड उसके बाद सिग्मा ऑफ 5 5 पे दे रहा है, 6 6 पे दे रहा है. सो यहाँ पर अगर साइकिल नोटेशंस पे लिखना चाहो तो क्या होगा 1 2 3 4. दैट्स मीन 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 एंड 4 का इमेज 1. It is a cycle process. Clear? Circular process. And other यहाँ पर जो एलिमेंट नहीं है वो खुद पर ही मैप हो रहा है. जैसे 5 नहीं है 5 5 पर ही हो रहा है, 6 नहीं है 6 6 पर ही हो रहा है, और कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये S6 है. सो इसका लेंथ क्या है 6, सॉरी 4. एंड second question, find the inverse of sigma inverse and tau inverse and find the compositions of sigma compose tau. So next page देखते हैं. नाउ इनवर्स ऑफ ए साइकिल. इनवर्स निकालने के लिए जो साइकिल नोटेशन है उसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखोगे तो हो जाएगा. जैसे सिग्मा इनवर्स 1 4 3 2, यहाँ पर 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 एंड 2 का इमेज 1. ऐसे करके टाउ भी लिख सकते हो. एंड कॉम्पोजिशंस, सिग्मा कंपोज टाउ मीन्स यहाँ पर कॉम्पोजिशंस मीन कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शंस सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ एक्स. तो हर एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो निकालोगे तो हो जाएगा सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ 1 मीन 1. सो सिग्मा ऑफ 1 का इमेज क्या था 2. ऐसे करके सारे निकलने के बाद सिग्मा कंपोज टाउ इज 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 एंड 4 का 1 एंड 5 का इमेज 6 एंड 6 का इमेज 5. क्लियर?
Now, what is the definitions of disjoint permutations? Let S be any non-empty set, finite or infinite. Let alpha and beta be any two permutations of S. They are called disjoint permutations if for every x belongs to S, alpha of x not equal to x imply beta of x equal to x, or beta of x not equal to x imply alpha of x equal to x. Equivalent statement, अगर x belongs to S such that alpha x not equal to x, जिसका इमेज x नहीं है उसका अगर कलेक्शंस लूं ऐसा करके बीटा बीटा पे भी सेम केस करो तो दोनों सेट के इंटरसेक्शंस अगर फाइव होगा तो दे आर डिसजॉइंट. Some example, let alpha beta belongs to S5 and alpha equal to 1 2 3 and beta equal to 4 5. यहाँ पर x belongs to S, alpha of x not equal to x equal to 1 2 3 because यहाँ पर 1 का इमेज 1 नहीं है 2 है, 2 का इमेज 2 नहीं है 3, मतलब यहाँ पर 1 का इमेज ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो मतलब जिसका इमेज वो खुद ही हो, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट होगा. ऐसे करके यहाँ पर सिर्फ 4 and 5 होगा, तो ये दोनों सेट के इंटरसेक्शंस 5 है, so they are disjoint. That's mean the permutations are disjoint permutation. Clear? Next. Now, any two disjoint permutations commute. So for this proof we consider two disjoint permutations. Let f and g. Now we want to show that f compose g equal to g compose f. Let S belongs to x be any element. Suppose f of x not equal to x. Then since f and g are disjoint, so since f of x not equal to x and f and g are disjoint, so g of x must be x. Now since f of x not equal to x and the function is bijective, so f of x is something, let y, then y not equal to x. Now f compose g of x equal to f of g of x. यहाँ पर g of x x है, so f of x and which imply y. And similarly g compose f of x equal to g of f of x and f of x means y, so g of y equal to y. g of y equal to y because if possible let g of y not equal to y. अगर g of y नहीं होता है g of then f of y equal to y because f and g disjoint and g of y not equal to y imply that f of y equal to y. But f of x equal to y and f of y equal to y, since f is bijective, so f is on and this imply that y equal to x, which is contradictions because यहाँ पर y not equal to x. So f g of y equal to y and यहाँ पर g of y equal to y लिख सकते हैं. So these two compositions of functions are same for all x belongs to S. So in this case f compose g equal to g compose f. यहाँ पर मैंने कंसिडर किया था s belongs to S such that f of x not equal to x. ऐसा भी तो हो सकता है g of x not equal to x. So next case, again if s belongs to S is such that g of x not equal to x, then f of x must be x. And proceeding similar process, we can show that f compose g equal to g compose f. And in both the case, we see that f compose g equal to g compose f. Clear? Any doubt? Thank you for watching and please like and subscribe. अगर तुम लोग साथ में रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो बनाने के. Thank you.